और अगली बड़ी खबर आरएसएस से जुड़ी हुई है। आरएसएस पर राहुल गांधी का बड़ा हमला देखने को मिला है। हमारी तारीख कोई बदल नहीं सकता, इतिहास को चलने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरएसएस की सोच के पीछे एक साजिश है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने साबिक कांग्रेस सांसद वाइको की किताब वाइको इन पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया। इस दौरान उन्होंने आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस देश की तारीख बदलने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे एक खतरनाक आइडियोलॉजी है। भारत अपने इतिहास के कुचले जाने को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो राहुल गांधी ने सख्त तनकीद की और आरएसएस को लेकर निशाना साधा। Will never ever accept any of its cultures, any of its languages, any of its histories to be trampled by anybody. And that is what really all the people on this stage do. They defend the idea of India in their own way, in their own state, in their own way, with their own imagination. And so I would like to thank from the bottom of my heart Mr. Vaiko for the service that he has done, not just to Tamil Nadu, but to the Indian Union, to the Constitution of India. It's an honor for me to come here. It's an honor for me to release the book, to speak a few words about him. He's an inspiration for all of us. He came to me and he said, you know, will you come and release the book for me? I said, Vaiko ji, what sort of question are you asking? That is not even a question you should be asking. If you have said it, I am coming. So that is the type of respect and relationship we have. I'd like everybody, the leaders on the stage, brothers and sisters who are here, and particularly the supporters who, as you said, have supported you through thick and thin without asking for anything, have given their blood and their tears for Mr. Vaiko. I'd like to thank all of you.